हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs फॉर UGC NET एंड JRF कॉमर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जाम। ओके, सो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हुए ही यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज FDI पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम the approval route to the automatic route with certain conditions. So यहाँ पे options है हमारे पास defense manufacturing, multi brand retail trading, insurance sector, telecom services. तो कौन सा वो सेक्टर है जो अप्रूवल रूट से ऑटोमेटिक रूट की तरफ शिफ्ट हुआ है विद सर्टेन कंडीशंस? द राइट आंसर इज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द इक्लेक्टिक पैरेडिज्म OLI framework of international business developed by John Dunning? ऑप्शन है ऑनरशिप लिबरलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, ऑनरशिप लोकेशन इंटरनलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी लाइबिलिटी एंड इंसेंटिव्स। सो राइट आंसर इज ऑनरशिप लोकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। क्वेश्चन 3, under WTO agreements ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA came into force in कौन से ईयर में आया था? 1999, 2005, 2013, 2017. So the right answer is 2017. Question number 4. As per Indian Accounting Standards 115, revenue from contracts with customers recognizes revenue based on transfer of significant risk and rewards, matching principle, transfer of control of goods or services, realization principle. The right answer is transfer of control of goods and services. Question 5. Which one of the following is not a limitation of ratio analysis? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन नहीं है। सो विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स, ये तो इसकी लिमिटेशन है। रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन होती है कि अकाउंट्स का विंडो ड्रेसिंग कर सकता है, उनको ऑल्टर कर सकता है। प्राइस लेवल चेंजेस, ये भी इसकी लिमिटेशन है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स नॉट कंसीडर्ड, बिल्कुल ठीक है, कंसीडर नहीं करता। और प्राइस लेवल जैसे जैसे चेंज होते हैं उनके हिसाब से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। कंपेरेबिलिटी अक्रॉस ईयर्स, आप अक्रॉस ईयर्स रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। दिस इज नॉट द लिमिटेशन, क्योंकि ये हम कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कंपेरेबिलिटी अक्रॉस ईयर्स एंड शॉर्ट। In forensic auditing, the term Benford's law is primarily applied to detect material misstatement in disclosures, analyze patterns of digits in financial data, classify related party transactions, or ensure compliances with GAAP. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनालाइज पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स इन फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, इससे रिलेटेड है हमारी बेनफोर्ड्स लॉ टर्म इन फोरेंसिक ऑडिटिंग। Question 7. In the context of oligopoly, the king demand curve theory suggests that, क्या suggest करता है king demand curve theory? Firms collude to maximize joint profits. Demand curve becomes horizontal in long run. Price rigidity results due to asymmetric reaction to price changes. And option D is marginal revenue is always greater than marginal cost. तो किंग डिमांड कर्व थ्योरी इनमें से क्या सजेस्ट करता है? किंग डिमांड कर्व सजेस्ट करता है कि जो प्राइसेस होते हैं वो रिजिड होते हैं। ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स ड्यू टू असिमेट्रिक रिएक्शन टू प्राइस चेंजेस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8. द लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर इज डिफाइंड एज प्राइस बाय मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, डी मार्जिनल रेवेन्यू माइनस प्राइस। देखो लर्नर इंडेक्स होता है क्या? लर्नर इंडेक्स आपकी पावर ऑफ मोनोपोली को शो करता है। ठीक है, लर्नर इंडेक्स का फॉर्मूला होता है हमारा प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस, यानी ऑप्शन बी। और इलास्टिसिटी अगर आपने चेक करनी है तो इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिसिटी लर्नर इंडेक्स होता है 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लर्नर इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा आती है उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग मोनोपोली पावर को इंडिकेट करेगा। जितनी कम आएगी इसकी वैल्यू उतना ये कम मोनोपोली पावर को इंडिकेट करेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Here is a little explanation for this. The Lerner index is a measure of market power or the degree of monopoly. Higher index means strong monopoly power. Question 9. Which one of the following best represents Baumol's sales maximization hypothesis?
Firms maximizes profit subject to the sales constraint. Firm maximizes sales subject to the minimum profit constraint. Firms maximize market share subject to price rigidity. Firms minimize cost subject to growth constraint. तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी. Firms maximizes sales subject to minimum profit constraint. 10th question. In CAPM capital asset pricing model, the security market line SML equation is, तो इनमें से कौन सी SML की इक्वेशन होगी? राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा डिवाइड ई इंटू आर एम, यानी रेट मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न. ओके, ये आपका फॉर्मूला बनेगा एसएमएल इक्वेशन के लिए सीएपीएम में. क्वेश्चन 11. द कंसेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एपीटी वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की थी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी? हैरी मार्क्सवर्थ, विलियम शार्पे, स्टीफन रोज, फिशर ब्लैक. इसका सही जवाब है हमारा स्टीफन रोज. Question 12. Basel third Accords introduced a leverage ratio to replace CAR, supplement risk-based capital requirements, abolish Tier 1 capital और liberalize financial markets. क्या सही आंसर है इसका? ऑप्शन बी, supplement risk-based capital requirements. Question 13. In services marketing, the gap model developed by Parshuraman, Jethamal and Barry identifies the difference between cost and prices. क्या आइडेंटिफाई करते हैं? ये जो गैप मॉडल है इन तीनों ने जो डेवलप किया था सर्विस मार्केटिंग का, वो क्या आइडेंटिफाई करता है? द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइसेस, गैप्स बिटवीन सर्विस एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन, द डिफरेंस बिटवीन बायर्स यूटिलिटी एंड सेलर्स वैल्यू, मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैप्स बिटवीन सर्विस एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन. दिस is identified by the gap model in service marketing developed by Parshuraman, Jethamal and Barry. Next question. In the context of consumer behavior, VALS framework classifies strivers as, strivers को किस फॉर्म में क्लासीफाई करता है? वाल्स मॉडल means value, attitude and lifestyles. Option A is achievement motivated with fewer resources. Option B is ideals motivated with low resources. Next is self-expression motivated with higher resources. Survivors with least resources. So इसका right answer है option A, achievement motivated with fewer resources. Question 15. Brand resonance pyramid was proposed by Ake, Kotler, Keller, Levitt. This was proposed by Keller. So option C. Next, the two-factor theory of motivation was developed by, बहुत easy question है, Herzberg, Maslow, Vroom और McClellan. Obviously Herzberg. Question 17. In HR analytics, predict analytics focuses primarily on, किस पर focus करता है predictive analytics? Describing past HR trends, predicting future HR outcomes, reporting employee absenteeism और मेंटेनिंग पेरोल. तो ह्यूमन रिसोर्स में ये किसको फोकस करेगा? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. दिस फोकसेस प्राइमरली ऑन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स आउटकम्स. Which among the following is not a method of executive compensation? ESOPs, golden handshake, gain sharing और strike pay. कौन सा मेथड नहीं है फॉर एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन? strike pay. According to Levin's change model, the three stages are freeze, transition, refreeze, unfreeze, change, refreeze, storming, norming, performing और preparation, action and evaluation. So Levin's change model में three stages इनमें से कौन सी है? Option B, unfreeze, change and refreeze. These are the three stages in Levin's change model. Bounded rationality as a concept in decision making was given by Chester Bernard, Herbert Simon, Frederick Taylor और Elton Mayo. So bounded rationality decision making का एक concept है और ये किसने propound किया था? This was propounded by Herbert Simon. According to Hofstede, which dimension refers to acceptance of unequal power distribution? Individualism versus collectivism,
uncertainty avoidance, power distance, masculinity versus femininity. So the right answer is power distance. Okay, so according to Hofstede, power distance dimension refers to acceptance of unequal power distribution. Porter's five forces model doesn't include threat of new entrants, bargaining power of suppliers, rivalry among existing competitors, और ब्रांड इक्विटी एनालिसिस. राइट आंसर है इसका ब्रांड इक्विटी एनालिसिस. ऊपर के तीनों फाइव फोर्सेस मॉडल में इंक्लूड है, पॉटर ने दिए थे, बट लास्ट वाला इंक्लूड नहीं है. ब्लू ओशन स्ट्रेटजी प्राइमरली फोकसेस ऑन competing in existing markets, creating uncontested market space, reducing research and development expenses, or exploiting supply chain efficiency. So Blue Ocean strategy focuses on creating uncontested market space. The ENSOF matrix includes all except which of the following? Market penetration, diversification, cost leadership और मार्केट डेवलपमेंट. तो ENSOF मैट्रिक्स में इनमें से क्या कवर नहीं होता है? कॉस्ट लीडरशिप. ध्यान रहे, मार्केट पेनिट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट ये तीनों कवर होते हैं ENSOF मैट्रिक्स में. इन ESG इन्वेस्टिंग द S स्टैंड्स फॉर. S का मीनिंग क्या होगा? सोसाइटी, सोशल, सस्टेनेबिलिटी और स्टेक होल्डर. सो S here stands for social. ट्रिपल बॉटम लाइन कंसेप्ट एम्फेसाइजेस. किस पर एम्फेसाइज करता है ट्रिपल बॉटम लाइन? इट एम्फेसाइजेस ऑन प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट और प्राइस, प्रोडक्ट प्रमोशन और प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस और रिस्क रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट. दिस इज emphasized by a triple bottom line. Blockchain in commerce is most relevant for which of the following? Centralized auditing, decentralized ledger transactions, artificial price control और HR analytics. So blockchain किससे related है इनमें से? It is relevant for decentralized ledger transactions. Which economists propose the concept of creative destruction in entrepreneurship? Joseph Schumpeter, Alfred Marshall, Frank Knight, John Keynes. Right answer is option A, Joseph Schumpeter. The Gini coefficient is a measure of economic growth, income inequality, market concentration or consumer surplus. The right answer is option B, income inequality. This is a measure of Gini coefficient. In taxation, the concept of base erosion and profit shifting BEPS was introduced by. बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग किसने इंट्रोड्यूस किया था टैक्सेशन में? WTO, IMF, OECD और UNCTAD. किसने दिया था? OECD. Which among the following is not a component of India's fiscal responsibility and budget management framework? इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है FRBM का? फिस्कल डेफिसिट टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट और डेब्ट टू GDP रेशियो. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग is not a component of India's fiscal responsibility and budget management framework. And option A, option C and option D, these are the component of this framework. Behavioral finance integrates finance with insights from sociology, psychology, anthropology or political science. The right answer is behavioral finance integrates finance with insights from psychology. Okay, so ये हमने क्वेश्चंस आज के वीडियो लेक्चर में कवर किया. आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक और बहुत यूजफुल लगे होंगे. राइट, आने वाले आपके UGC नेट एग्जाम के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. आप एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनका कॉमर्स सब्जेक्ट है. थैंक यू फ्रॉम माय साइड. हैव अ गुड डे.